Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter Distillation. So in this video, we will cover its principle and application of distillation. For my previous video on pharmaceutical engineering on other chapters, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So let's start the definition of distillation. So distillation is basically defined as the separation of the components of a liquid mixture by a process involving vaporization and subsequent condensation at another place. So basically distillation जो रहती है उसमें दो steps involved होते हैं. एक क्या होता है कि वो liquid को vapor में convert करती है, that is the first step. Then second step में वही vapor को वो दूसरी place में transfer करती है और रिकवर करती है इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. सो बेसिकली जो भी फीड आप प्रोवाइड करते हो जिसका आपको डिस्टिलेशन करवाना होता है उसको डिस्टिलेंट बोलते हैं. एंड जो कंडेंस्ड लिक्विड होता है उसको डिस्टिलेट बोलते हैं. सो आई विल राइट द फीड ऑफ द लिक्विड इज नोन एज डिस्टिलेंट and the condensed liquid is known as distillate. So these are the या उसको distillate को आप condensate भी बोल सकते हो. So if one component is volatile and another one is non-volatile, so it is possible to separate volatile component from a non-volatile component by distillation process. So ऐसे केसेस में क्या होता है, distillation is condensed as a separation or purification method. So when heat is applied to a mixture, a more volatile liquid evaporates readily than the less volatile liquids. So as a result, the condensate liquid consists of a high proportion of highly volatile liquid and less amount of less volatile liquid. So therefore you can say that the distillation is said to be a partial separation method also. Then the extent of separation is governed by the properties of component involved and the physical arrangement used for the distillation. So basically जो भी आपकी evaporation, distillation और drying की process होती है, they are little bit different from each other. So the definition of distillation is already I can discuss with you that the condensate vapor is required as a product you can get in the form of distillation, and in evaporation it is used when the concentration liquid residue is needed as a product. Then drying operation is used when the dried solid residue is required as a product. सो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो डिस्टिलेशन बेसिकली आपको अगर किसी भी लिक्विड को लिक्विड से सेपरेशन करवाना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो आपको कंडेंसेट वेपर जो रहेगी अदर प्रोडक्ट के फॉर्म में यू कैन गेट दैट लिक्विड पोर्शन. और इवोपरेशन में बेसिकली जब भी आपको अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लिक्विड रेसिड्यू अगर चाहिए तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मिलता है किसी भी रेसिड्यू का. और ड्राइंग में आपको एक तरीके से पूरा ड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा, सॉलिड ड्राई रेसिड्यू मिलेगा. अब आती है इसके एप्लीकेशन की बात. तो अगर एप्लीकेशन को देखा जाए तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स. तो वोलेटाइल ऑयल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लाइक क्लोव से यू कैन सेपरेट वोलेटाइल ऑयल्स, एनी सीड से कर सकते हो, फिर यूकेलिप्टस लीव से कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. देन सेकेंड जो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ organic solvent. So normally simple distillation method is used for the purifications of the liquid having single component as a major function. Simple distillation method is also used for determining the boiling range of a liquid as per IP. A method to decide the purity, so the absolute alcohol like 100% ethanol can be obtained by the azeotropic distillation. Also you can get that 100% ethanol. Now next एप्लीकेशन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ऑफिशियल प्रिपरेशन. सो जो स्प्रिट रहता है नाइट्रस इथर का और एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया यू कैन प्रिपेयर बाय द सिंपल डिस्टिलेशन मैथड. सो डिस्टिलेशन वाटर एंड द वाटर फॉर इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेसिफिक फार्माकोपिया मैथड बाय द सिंपल डिस्टिलेशन एंड द कंप्रेशन डिस्टिलेशन मैथड यू कैन गेट. Then next is by refining of the petroleum
प्रोडक्ट. सो इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो भी आपके क्रूड ऑयल रहते हैं जिनको रिफाइन किया जाता है, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू यू कैन distillate. So each fraction is a multi-component system. Example, petrol atom, ether 60 and 80 you can get. Then next is the recovery of the solvent. So basically solvent are used for the extraction of the drug from plant parts and any synthetic reaction mixture. So this solvent must be recovered in order to prevent the environmental contamination. So the recovered solvent may also be recycled for further use. Then next is you can say that the quality control method. So distillation method is used for determining alcohol content in liquid dosage form such as elixir as per the IP 1996, or azeotropic distillation method is used for the determination of water content in the substance using toluene according to the IP 1996. तो क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स के बेसिस पे भी आप इसमें मतलब कि कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है वो आप डिटरमाइन कर सकते हो. प्लस आपका जो नेक्स्ट है दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. सो ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन्स लाइक फ्रॉम द प्लांट और आर नॉर्मली एक्सट्रैक्टेड by using the method like the percolation and by maceration process you can get that extract, or the mainstream like the solvent used for the extraction is distilled off and the active constituent are separated easily. For example, if you want to separate vitamin A is separated from the fish liver oil using the method of molecular distillation process. Next is the purification of the drug obtained from the chemical process. So many chemical processes are involved for the conversion of raw material into the product. So the products are separated from the reaction mixture and purified using the method of distillation process. So these are the basic applications. Now let's talk about the principle. So the separation of component from a liquid mixture via distillations depend on the difference in the boiling point of the individual component. तो जब भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है तो उससे यू कैन सेपरेट दैट मिक्सचर, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर कैरेक्टराइज्ड बाय द लिक्विड मिक्सचर. तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है आपका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होना चाहिए, दूसरा आपका वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. तो फॉर एनी लिक्विड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड्स आर कंटिन्यूसली इन द मोशन. एज यू कैन ऐसे आपको पता ही है कि जब भी आप किसी भी लिक्विड की बात करते हो तो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं. अगर उसमें उन मॉलिक्यूल्स को अगर इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो लिक्विड फेज को लीव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये क्या करते हैं कि एक तरीके से अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं. तो जब इनफ एनर्जी क्रिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो क्या होता है कि सॉल्यूशन जो रहता है वेपर प्रेशर जो रहता है उसका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल्स टू हो जाता है और लिक्विड बॉयल करने स्टार्ट कर देता है. तो जब भी आपका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल्स टू में आ जाता है तो लिक्विड जो रहता है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, और इवोपरेशन जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी उससे लेस में इवोपरेशन स्टार्ट होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा लेस रहता है आपका वेपर प्रेशर. तो सो बबल्स जो रहते हैं वो आपके कैन नॉट फॉर्म सिंस द वेपर प्रेशर इज़ लेस देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वेपर प्रेशर जो बबल्स रहते हैं वो इवोपरेशन में टेक प्लेस नहीं करते हैं, जबकि बॉइलिंग में आपके बबल्स फॉर्म करते हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर देता है, जिसकी वजह से आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. So this is the basic principle. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.